Hi, so welcome to DCA. So in this second session of Commando Approach to NDA exam, we are going to talk about the chemistry section. Chemistry section is considered as one of the most easiest section actually. So in overall trend you can say as per the pattern of UPSC, there are around 15 questions, 15 के आसपास questions होते हैं which are going to be in the paper, right? That means indirectly you have 60 marks for this section. And being the easiest one, it's very easy to score around 10 to 11 correct, very easy, anyone can do that, right? And but you should hope that you should get at least 13-14 correct, because this being the easiest subject, right, in terms of the syllabus, because it's not exactly 11th and 12th syllabus which you have to cover in this section as per the NDA exam is concerned. आपको 11th 12th नहीं करना, right? You don't have to go into the depth of, you can say that organic chemistry, inorganic chemistry. You have to be just एक आपको cover built up करना है according to the syllabus. So let's start. So I am going to talk about which topic you should keep in mind first thing, and how to cover the chemistry in the 8 hours. Right? If you are investing 7 to 8 hours, you can cover the complete chemistry. Of course, the assumption is that you are 12th pass, या 12th appearing है, and you know at least what is chemistry and some basics of the chemistry. If you come and say that I don't know what is sodium and potassium and you are going to cover in next 8 hours, it is impossible, right? So assuming that you are at least an average candidate, average aspirant, you can definitely cover it up. The priority wise, we'll talk about priority wise कि which is the easiest one, and the questions are definitely going to be in the paper. हम उन टॉपिक की बात करेंगे जिसके questions श्योर शॉट होंगे एग्जाम्स में, और जिनको करना आसान भी है और आपको पहले से पता है कि ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं. द फर्स्ट वन इज फिजिकल केमिस्ट्री सेक्शन, दैट इज oxidation reduction. There will be at least 1 or 2 question. They will ask you which of the following is oxidized, which of the following is reduced, which of the following is oxidizing agent. ये बड़ा important section है, right? Maybe they will be talking about which of the following is chemical change, physical change. Indirectly इस part से at least 2 और maximum 3 या 4 questions आते हैं. So you can easily do that. Oxidation reduction, finding out number of moles, the equivalent weight, how to calculate the equivalent weight. I remember the question asked in NDA was to calculate the equivalent weight of H2SO4. It's too easy actually. It's too easy. Any 10th class student can easily do that, right? ये क्वेश्चन आपको करने में, इस पोर्शन को रिवाइज करने में, अगर आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो मैक्सिमम 1 से 2 आवर्स लगते हैं, बिकॉज ये टोटली कंसेप्चुअल है, इसमें कुछ भी रट्टा टाइप नहीं है. So it will take around 1.5 hours or maybe maximum 2 if you want, right? और आप 25 से 30 क्वेश्चंस इसके रिवाइज कर लें. आप प्रीवियस ईयर भी करेंगे तो भी काफी हो जाएगा, जो बात है, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से वही आता है, बहुत टफ वो पूछते नहीं है. The only thing, the key learning is you should be able to balance the chemical equations. Balancing आपको पता होना चाहिए, which I believe you know at this stage. Next is important compounds. That includes carbon and compounds, the properties of carbon, allotropes of carbon, right? As well as some application, like if you talk about some salts which are important, like plaster of Paris, you talk about washing soda, baking soda, gypsum, this type of thing you need to remember, as well as the application bleaching powder. You should remember this. एक question तो जरूर आएगा from 2 pages of NCERT. There will be certainly 1 question from this section. Next, application. What is antipyretic, right? Is what is analgesic. जो general life में, general chemistry in daily life, that is going to be at least. तो important compounds से the minimum number of question will be 3. Minimum 3 questions होते हैं. Although it's quite easy, 90% of the candidates know this. But वो बच्चे अगर आपने नहीं किया है तो आपको disadvantage में रहेंगे, तो आप कर लें. कुछ करो ना करो, chemistry जरूर करो. This is going to be the most rewarding one, the easiest section in the NDA paper. Next, properties of air, water, hydrogen and nitrogen. That includes hydrogen cycle, nitrogen cycle, water cycle as well, and the constituents of air. राइट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. कोलाइड्स, जेल, कोलाइड्स वगैरह, इमल्सन, सब इसी में आपको कवर करना है, राइट? इट विल टेक अराउंड 2 आवर्स मैक्सिमम, और आप मैक्सिमम 2.5 घंटे ले सकते हैं. बट आप इसके एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस करें, और एमसीक्यू इसलिए मैंने +1 आवर्स लिखा है, ताकि आप दिस +1 आई हैव पुट अप एवरीवेयर. दैट इज, दिस मीन्स यू नीड टू रिवाइज. 2-3 आवर्स आपने पढ़ा और 1.5 घंटे आप क्वेश्चंस करें, मतलब 30 से 40-50 क्वेश्चन आप कर लें, तो आप अपने को सेफ साइड पाएंगे. आपको क्वेश्चन 15 में से 10 क्वेश्चन देखे हुए मिलेंगे. दिस इज श्योर शॉर्ट. दिस सेक्शन इज समवन where you can find out कि okay you have seen almost every question in the books or the notes which you have prepared अगर आपने किया हो. Last but not the least, the easiest is atomic structure. एक question जरूर होता है.
नेक्स्ट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लाइक आप जैसे आप पढ़ते हो ना चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, जो गैस 22.4 लीटर्स एक मोल में, इस टाइप की चीजें, सम सिंपल कैलकुलेशंस, डिफ्यूजन वर्सेस ऑस्मोसिस, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, आपको ये करना है अराउंड, आप मैक्सिमम 1 घंटे में कर लोगे, बट आपने 2 घंटे भी लगाया, बट आप 1 घंटे थोड़ा रिवाइज कराने पे लगा दो एमसीक्यूज में, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स विच यू कमिट इन एमसीक्यूज, राइट। तो जो जैसे मान लो आपने कोई ना कोई बुक फॉलो किया होगा, आप एनसीईआरटी अगर रेफरेंस पूछोगे, एनसीईआरटी इज ऑफ कोर्स द गुड वन, एवरी क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। अगर आपको पास टाइम नहीं है तो आप 9th-10th का कर ले, वो भी बहुत है, बट आप एमसीक्यू जरूर करें। जैसे हमारे बच्चे, हमने भी एमसीक्यू दिए, बच्चे इन द सेंस कोचिंग के जो बच्चे जो क्लासरूम में है, रिवीजन एमसीक्यूज वाले में, आपको जो टेस्ट में क्वेश्चन आता है, यू कैन सी द क्वालिटी इन द सेंस, एक क्वेश्चन में हम 3-4 चीज डालने की कोशिश करते हैं ताकि आप उससे कुछ ना कुछ सीखें। ऐसे क्वेश्चन आप कर लीजिए, 50-60 का स्टॉक है, दैट इज इनफ to score in your NDA chemistry section, right? So this is again fast and furious approach, right? Assuming that the exam is around 10 days away, this approach will definitely help you to boost your score, that is NDA score booster session, right? In case of any queries, any question, anything you want to ask, do ask us at 7710548960. Thank you. I hope this session was helpful for you. Bye.